आज IIA के बहुत से इंजीनियर्स भारत की लगभग हर एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, जेट लाइट, इंडिगो एयरलाइंस, पैरामाउंट एयरवेज, स्पाइस जेट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही IIA ग्रुप के इंजीनियर्स दूसरे जनरल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट एविएशन डिपार्टमेंट, UB एयर, एयरवर्क्स, इंटरग्लोब, इंडो पैसिफिक, रन एयर, शौर्य एविएशन, एशिया एविएशन, ब्लू डॉट एविएशन और डेक्कन एविएशन में भी कार्यरत हैं। बहुत से इंजीनियर्स फ्लाइंग और AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। Hello everybody, my Institute of Aeronautics. I've been passed in 18th batch. It was a very good experience working over there. I've been working in Lufthansa for around last 2 years. Before that I worked in Cathay Pacific. Did a course from Hong Kong for 747. This is all because what HIA gave me. It was a very nice institute. The atmosphere was very warm. The teachers were very concerned. It was very nice. And the study, everything was very good. What I learned, what I am here right now, is just because of such an institute. Hi, I'm Kumar Madhavendra, ex-student of IIS Jamshedpur. I was from 14th batch, and I'm assistant manager engineering with Indigo Airlines. Hello, I'm Amit Handa. I'm from 15th batch Indian Institute of Aeronautics. At present, I am working with Air India Limited, and I'm senior aircraft engineer there. So I am really happy that I am alumni of this institute. This institute is really doing a great job of giving very good training for aircraft maintenance engineering, and the way they teach and the way they emphasize on the DGC papers and the studies, it is really commendable. Hi, I am SB Das. I joined the institute in 1985. I am from 6th batch. मैं इंस्टीट्यूट में बच्चा बन के आया था. In the year 1985, when we came to the institute, I came to the institute. मैंने कभी हॉस्टल में नहीं रहा था. मुझे बाहर का दुनिया का कुछ नहीं पता था. ये मेरा इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे एक आदमी बनाया. I left the institute in 1988. I joined Pavanance in 1989. Right now, I am working as a senior engineer in Pavanance Helicopters. जो कुछ आज मैं जिंदगी में हूँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरे इंस्टीट्यूट की वजह से है. My institute has trained me to become a man, to become a technocrat, to become an AME, and to shine in aviation and in life. It helped me a lot to explore for my experiences in the aviation industry. My name is Rajendra Kumar. I am from 9th batch of Indian Institute of Aeronautics. Presently, I am working for Jetways as Assistant Manager in Line Maintenance Department. I feel proud that I am part of this institute, Indian Institute of Aeronautics. विदेशी एयरलाइंस में कार्यरत IIA के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी काफी संख्या में हैं। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स बनने के लिए आप में जुनून, संकल्प और काबिलियत की आवश्यकता है, ताकि आप कठोर मेहनत और चुनौतियों को स्वीकार करें और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। भारत में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कार्यक्षेत्र अभी भी अनछुआ है। असंख्य अवसर और आसमान छूते वेतनमान आपका इंतजार कर रहे हैं। And I'm proud to be a student of IIA. I feel proud that I'm part of JRM. I am very proud to be the part of this esteemed institution. I'm proud to be part of this institute. I feel proud to be a student of JRM Institute of Aviation Technology. Come and join us, the Indian Institute of Aeronautics Group.